नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल KFCS पर। तो गाइस आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि किस तरह का आज गेम हुआ। फर्स्ट डे था आज वर्ल्ड कप क्वालीफायर का और जिस शुरुआत की आवश्यकता थी इस टूर्नामेंट को वो शुरुआत मिली है फाइनली और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ आज की शुरुआत। हालाँकि जो हमने कहा था आपको कि जो टीम जीतेगी, जीत उन्हीं टीम को मिली है, लेकिन जो एक फ़ाइट देखने को मिला, जो एक क्रिकेट लवर्स देखना चाहते थे उस फाइट को, वो फाइट हमें देखने को मिली है। और फर्स्ट डे ऑलमोस्ट आप कह सकता हूँ मैं कि 3 सेंचुरी, चौथी सेंचुरी भी हो जाती है। एक प्लेयर 99 पे आउट हुए हैं। तो फर्स्ट डे अगर आपके ऑलमोस्ट 4 सेंचुरी बन जाए, 1 रन और हो जाता तो चौथी सेंचुरी भी होती। तो मैं कहता हूँ टूर्नामेंट का आगाज़ बहुत शानदार हुआ है और टीम जिस तरह से फाइटिंग स्पिरिट दिखा रही है। दोनों मैचेस की अगर मैं बात करूँ, जो मैचेस आज के थे वो थे आपके ज़िम्बाब्वे नेपाल और वेस्ट इंडीज़ यूएसए के बीच, जो कि एक तरह से वन साइडेड गेम आप कह सकते हैं कि ज़िम्बाब्वे को वन साइडेड विन करना चाहिए था, वेस्ट इंडीज़ को वन साइडेड विन करना चाहिए था, बट ये मैच वन साइडेड नहीं था, हाई स्कोर्स बने। और अगर टूर्नामेंट का पहला दिन ऐसा हो जिसमें आपको बड़ा स्कोर देखने को मिले, तो से पता लगता है कि जो आजकल की जो क्रिकेट है वो कितनी बदल चुकी है। हर टीम जो है यहाँ पे अब तैयारी करके आई है और अच्छी दिख रही है टीम्स, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा होता है एक टूर्नामेंट के लिए। तो आज थोड़े डिटेल में बातचीत करते हैं दोनों मैचेस की। तो अगर मैं एक-एक करके दोनों मैचेस की बात करूँ, तो जिस तरह से मैच हुए आज के, स्टार्ट जिस तरह से दिन का रहा है, मुझे लगता है कि अ, बहुत ही अच्छा था स्टार्ट। स्पेशली नेपाल की बात करूँ, तो जिस तरह से मैंने इस खिलाड़ी को बैटिंग करते हुए देखा, मैं लाइव देख रहा था मैच, तो कुशाल भूटथल 95 बॉल्स 99 रन्स, बहुत ही शानदार। और मतलब जिस तरह से पार्टनरशिप हुई फर्स्ट विकेट के लिए 171 रन जोड़े, 30 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गया था। किसने सोचा था कि नेपाल की टीम इतनी शानदार शुरुआत करेगी। सामने ज़िम्बाब्वे की बॉलिंग है गाइस, ज़िम्बाब्वे की बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग मानी जाती है। हमारे कमेंट आया हुआ है ओके, आई एम थिंकिंग हाउ वेस्ट इंडीज स्टिल क्वालिफाई टू टॉप टू, यूएसए इज वेरी टफ फाइट, लॉस्ट बाय ओनली 39 रन, नॉट बाय बिग मार्जिन। बिल्कुल कृष्णा गोपाल, जो आप कह रहे हैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ने एक बड़ी जीत को मतलब कह सकते हैं ठुकरा दिया। मौका था उनके पास एक बड़ी जीत को दर्ज करने का, उन्होंने जो ब्लंडर किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने किम्मो पॉल के ओवर्स पूरे नहीं कराए, जो कि रिसेंट सीरीज में किम्मो पॉल बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इसके अलावा मेरे को और भी लगा कि कहीं-कहीं पे वो अ, अच्छी बॉलिंग करवा सकते थे। स्पिनर्स को बहुत देर से लेके आए, मेरे को ये भी लगा। और कई जगह पे ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है थोड़ा-सा जो है गेम को उन्होंने ढीला छोड़ दिया है। मतलब एक होता है कस के गेम को पकड़ के रखा हो, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, लगातार विकेट चटका रहे हो, तो विकेट टेकिंग डिलीवरीज़ नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ थोड़ी-सी दिखी मुझे और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में वर्क करने की ज़रूरत है। हालाँकि जिस तरह से काइल मेयर्स का यूज़ किया आज वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, वो काबिल-ए-तारीफ़ था और 2 विकेट्स भी चटकाए काइल मेयर्स ने। हालाँकि ओपनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बट स्टिल आज वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अच्छा बैटिंग किया है। स्टिल हमने देखा कि ओपनर्स बहुत सस्ते में आउट हो गए थे, फिर भी टीम ने स्कोर इतना लगाया। तो बैटिंग के मामले में ठीक है, बट मुझे लगता है थोड़ी-सी बॉलिंग के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैं वेस्ट इंडीज़ और इसकी मैं बात करूँ अगर, तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के मैच में वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट हो जाती है, पूरे 50 ओवर खेलने का मौका नहीं मिलता है, 297 का स्कोर। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा आज वेस्ट इंडीज़ के लिए कि उनका इन फ़ॉर्म बल्लेबाज़, जो पिछले सीरीज़ में सबसे शानदार इन फ़ॉर्म बल्लेबाज़ था, ब्रेंडन किंग, वो भी आउट हो गया। तो वो सबसे बड़ा मतलब झटका था उनके लिए। और अगला यहाँ पे नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे प्योरली बैटिंग पिच, दैट्स व्हाई जिम्बाब्वे बैटर डिड वेल, won by 8 wickets, that's the main reason why Nepal scored 290 runs। कृष्णा कह सकते हैं इस बात को, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब प्योरली बैटिंग पिच थी।
पिच ये था कि मतलब धीरे-धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, ड्राई विकेट थी पूरी और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ ना कि मतलब इरविन और विलियम्स उस तरीके के बल्लेबाज हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, वो माने जाते हैं उस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए। पिछली सीरीज़ आप उठा के देखो, इरविन बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। विलियम्स भी ठीक-ठाक बल्लेबाजी की, बट आज जिस तरह से विलियम्स खेले, एक अटैकिंग अप्रोच से, मुझे लगता है कि मौके नहीं थे बिल्कुल भी नेपाल के पास। और सबसे बड़ी नेपाल के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उनका मेन स्पिनर जो उनका ट्रम्प कार्ड था संदीप लमिचा ने 10 ओवर में 77 रन दे दिए। तो वहीं पे जो है नेपाल का मैच ओवर हो चुका था। हालाँकि कमी ने भी पूरी कोशिश की कि वहाँ पे विकेट्स लेने की, अच्छे ओवर्स चल रहे थे, बट मुझे लगता है कि ज़िम्बाब्वे ने मैच को जीता है अपनी मेहनत से। जिस तरह से बल्लेबाज़ी की है, स्पेशली इरविन इरविन ने एक छोर सँभाल के रखा, मिडवेयर का कैच भी ड्रॉप किया था वहाँ पे नेपाल की टीम ने। तो मुझे लगता है कि वो बैटिंग पिच इतना भी नहीं था, बट हाँ, कि मज़ेदार मैच था। और आज के दिन सबसे अच्छी चीज़ हमने देखने को मिली 3 सेंचुरीज़। अगर एक टूर्नामेंट का फर्स्ट डे 3 सेंचुरीज़ आ जाए, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आज देखने को मिली हमें। 3 सेंचुरीज़, चौथी सेंचुरी भी आ जाती, मुझे लगता है कि वो 99 पे बहुत अनलकी आउट हुए। अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी। हू इज़ योर टॉप 2 टीम क्वालिफाइड? डू यू थिंक वेस्ट इंडीज़ हैड अ चांस? अ, देखो, कृष्णा गोपाल, अगर जिस तरह से मैं बात करूँ तो हमारे साथ कृष्णा नायर जुड़ चुके हैं। ओके, सो कृष्णा नायर, हेलो। Kunal, हेलो, कृष्णा नायर, यू हैव सो मच इश्यूज विद नेटवर्क। ओके, yes, Kunal, tell. ओके, ओके, Can you hear सो Kunal? दिस इज अ कमेंट। यस, 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 आई हैव सम नेटवर्क इशू ब्रो समटाइम। या, ओके, Yeah, because I'm सो with mobile data, right? That's why. okay, okay, okay. Okay, so there's a comment from Krishna Gopal, who is your top 2 team to qualify. Do you think West Indies has a chance? I think the way West Indies bowling today, I don't so impressed with the West Indies bowling. I think in bowling wise, West Indies is slightly weak, not too much, but slightly is weak team in terms of bowling. And I think they have not utilized the over of Kimmo Paul. Kimmo Paul was your best performer in previous series. So I think that when West Indies versus Zimbabwe match will happen, uh, result can be go in Zimbabwe ways. Maybe there might be chance. Yeah, and Kunal, I want to say that today West Indies bowling look very weak. A team like USA mostly chased the total. They only lost by runs. Yes, and big thing we see that in an opening combination, why you are do so much experiment? Shai Hope knows that he is a good player in opening, so why he left his spot for Brendan King? You are bringing Kyle Mears. Kyle Mears is struggling in starting overs. So why Kyle Mears? I don't know. And third, And that's what Kyle Merz is a T20 player. Why set up? he is not a ODI setup player. Uh, Meanwhile, he takes 2 wickets as an all-rounder. You Why are West playing Indies him, is then it's better that Shai hoops. Yeah, that's what I'm saying, Kunal. That Kyle If Merz is a proper T20 batsman. He should only play T20 format. I don't know why he's playing ODI format. He's not a ODI type and of player. And big thing what we see here, Krishna Nair, if you see the bowling card of West Indies, 10 overs to Roston Chase, okay? 10 overs to Roston Chase, which they never give him 10 overs before this match. Akil Hussain, 10 overs, okay? Aljari Joseph, okay? But why not Kimmo Paul give the 10 overs? Economy rate is 3.8. Why not this player get all the 10 overs? I think if Kimmo Paul came, then might be match will go mm, maybe till 30 overs, not more than that. Against So Roman Powell also didn't bat it, huh? Roman Powell, first ball duck. Kunal, what is this here? West Indies batted like jokers, man. Against team like USA, you got all out below 300 runs. Shame, man. Below 300 is okay, but the way their openers are struggling, I think Shai Hope should come into their original place of opening. That is better for the team.
associate nation, and that's shock for West Indies team. I don't know how they will play top teams in ODI World Cup if they qualify. Yeah, very difficult for West Indies. I think when they will play with Zimbabwe, the Zimbabwe will give so much fight. Naturally, Zimbabwe today changed easily the target of 292. Actually, this is a class of this both these batsmen. They are really talented. Irvin, uh, Williams. If even if Sikandar Raza batting came, definitely he will go for more runs if I possible. won't be shocked if Zimbabwe beats West Indies in World Cup qualifiers. Yes, definitely, because the way they are bowling, I don't know how they are doing. One more comment from Krishna Gopal. USA main pillar is Steven Taylor and Aaron Jones. Tough luck for USA today. Both batters went early. Otherwise, USA won easily. Krishna Gopal, I can't say that they can won that match easily, but I think West Indies have. Man, they are losing by 39 runs is also a victory for USA, man. Yeah, because USA, we know that USA is not that type of professional team, but the performance, especially Gajanan Sharma, his batting was good for team prospect, I think, and good bowling from Taylor also. 3 wickets from Taylor, Aaron Jones, and their opener is, and both are West Indies. You know, Krishna, both are West Indies player, Taylor and Aaron Jones. They are playing against West Who Indies. from USA, na? That openers. Yeah, Steven Taylor and middle order Aaron Jones. Both are bowling figures are for Steven Taylor 8 overs 53 for 3 and Aaron Jones 2 overs 30. Yeah, actually, USA nearby countries, I feel. Yeah, and Kyle Phillip is also West Indies player 3 wickets for 56 today. So I think This is USA good was good performance by and Nepal USA. also. It's not a bad performance if they don't even qualify for World Cup in India. I feel this is a good performance by USA. And definitely in the first day, if you get 3 centuries in the first day, 3 century, 150, yeah, I can say that Nepal batsman goes out of 99. That will, should be concluded as a century. It's okay, you were gone in 99, but good cricket in the first day of qualifier. And I think this tournament will be get high viewership due to this type of quality cricket. I think so. What do you think, Krishna Nair? 3 centuries today. Hello, Krishna Nair. Yeah. So did you follow the Edgbaston Test Yes, yes, match, yes, yes. At Western also. Yes, yes. Uh, in that match, I think. Let me take this another Yeah, comment. As yes. Yannick Correa is injured, who is their main spinner? I feel they should bring as a replacement as Kevin Sinclair because previous series Sinclair took 4 wickets against UAE. It's okay, Krishna. Even Akil Hussain is also good bowler. No, I don't say that Akil Hussain is not that type of bowler, but I think it is a captaincy issue to rotate your bowlers at the right time. I don't know why Kim Paul Yeah. only 6 overs. He's that type of bowler who can bowl all the full quotas. Even you can minimize the over of Kyle Mears because Kyle Mears is not on your ODI setup. Suddenly he came in your ODI setup. 6 overs, 30 for 2. Kyle Mears. But today, Jason Holder was good from bat as well as bowl also. 8 over 36 for 1 and with batting 50 plus runs that made a score of around 300 runs. So credit goes to Holder 40 ball 56 runs. I think in bowling department West Indies need to think little bit and for opening also I think so they have to think whether Kyle Mears should play in a middle order maybe number 3 Look, Kishan Iyer.
Yeah, especially their bowling unit. Do you think that Kyle Mears can come to number three and Shai Hope should open? Yeah, that's what I said in last stream as well. That Shayok should open. He shouldn't bat in middle order. He's good at opening. He has scored most of his centuries at opening position. So I feel he should open the innings. And as per West Indies bowling, I feel West Indies bowling is lacking bit experience. If you see Holder is only experienced bowler, but still they don't have any experienced bowler in their lineup. Holder, Aljari, Joseph, Akil, Hussain, Yeah, but only Hanif. two, right? In 50 over format, only two good bowlers are there. So naturally, you will struggle. You will win by a less margin against team like USA. Yes, definitely. And I think this is the type of match that West Indies should win it in one-sided ways, so that Yeah, your net run exactly. rate will be in good. Yeah, Otherwise, and you will get it good may harm you. confidence going into the World Cup and the upcoming series against India as well in July. So West Indies bowling is too weak, I feel. That last stream that Kemar Roach should come in the bowling option. He's a test bowler, but in ODI also he bowled very well. So I feel Kemar Roach should get chance in ODI setup. And I think the way Nepal is playing today, Nepal can also give good contest to this West Indies team. The Yeah, way West never Indies know. team is bowling. And one more team, there's apart from Zimbabwe, there is Netherlands. Netherlands is also a good team. If we talk about their batting position, the Max O'Dowd, their captain also has a good form. Yeah, Basdi Lide. Basdi lead. So Yeah, I he's a think, good player, good all rounder. I feel. yeah, but in ODI setup, he is a good batsman. They are using him as a batsman. If I talk about Netherlands squad, that Max O'Dowd, Vikramjit Singh, what a good tournament for him in T20 also. Basdi Lide, Max O'Dowd, Scott Edwards as a captain, Weasley Baresi, and in bowling also they have Logan Van Beek, Vivan Kigma. So I think so. Netherlands is also big concern if you are playing like this West Indies team. So Yeah. uh, So yes, what do you Krishna think, Gopal Kunal? Can Logan Van Beek is a Netherlands main pacer. Yes, as a main pacer he will bowl all the 10 overs for Netherlands. Yes, so Kunal, did you follow Edgbaston Test match? yes, at Western Test match I followed, and I think their bowlers have made the Stokes happy that you are putting Australia all out before a lead. Just 7 runs lead is okay, but your bowlers have doing good work. Especially, I thought about it yesterday video. I also told that if in a first session you can pick this Australia team, then definitely match will change. And I think that is a good for England also. But in second innings, 28 for 2 is again concern for England. You have only 35 runs lead. And I don't think now they can go with a baseball approach. I don't think so. Yeah, but if you see today's condition in the when England came to bat, it was bit cloudy, it was bit overcast, so there was more swing in the in that pitch. That was that Yes. was a big tough ask for batsmen to survive that period. You get out in that situation as well. So that only happened with today Zach and Ben Duggett in that period. And again, the England will be dependent on Joe If Root you saw, again. if you saw Kunal when Australians were batting, especially Warner was struggling. He, means Australia were giving maidens, three, four back-to-back maidens to Broad and Anderson, and that time overcast conditions. It were cloudy conditions. That's why Broad get Warner in that wicket, and Manas Labuschagne also felt in first ball duck. So I feel the condition because of conditions only the batsmen are getting troubled in this sense. Yes, definitely. Yeah, and I think so. Still, this game is in balance, but now it's up to Joe Root that how he will go.
Uh, And okay. especially Ollie Pope. Ollie Pope has to support him to build up good lead. Yeah. Okay, so Krishna Gopal is saying tomorrow another two match for World Cup qualifier, same time Ireland versus Oman and Sri Lanka versus UAE. I think I feel UAE is Ireland not and that Sri type. Lanka will win. I feel Ireland and Sri Lanka will. Yeah, that is easy win. I guess the way Sri Lanka is playing in a practice matches, especially that match of 392 runs, I don't think UAE will give that much of competition because they have no players like Chirag Suri. The way Chirag Suri was played for UAE, so I think all the things are depend upon Wasim Mohammad Wasim. If Mohammad Wasim will perform, then things will change. But I think so. Sri Lanka will win it easily. Yes, Ireland versus Oman will be good match because for Ireland, I think again they are dependent on their batting unit. I think so. Uh, Harry Tactor, Paul Sterling, Belburn is also good batsman. If in ODI setup, I think he's a good batsman if we compared about ODI. So I think that will be the great match in Oman. Also, I think they are depend upon two three players, and those two three players can maybe make the match around 280 to 90 runs. Maybe. Yeah. Do you think Krishna Nair same thing will happen Yeah, yesterday Oman today? can give good competition to Ireland because both are associate nations. And if you see, Oman has also have good two three players in their lineup, so they can give good fight to Ireland. But I feel Ireland will win in the last. And Sri Lanka versus UAE, it will be one-sided game. I feel if UAE batters don't step up properly, I feel Sri Lanka will win it quite comfortably. Yeah, if I talk about Oman, also they have only two, three batsmen that have good capability. Uh, Jatinder Singh, Akib Lias, Jisan Maksud, and Nazim Khushi. That's it. These are three, four batsmen that can make runs for them. Otherwise, I think so. It is a easy match for Ireland because if I talk about Ireland squad, they have Josh Little also, Curtis Camphor, Gerard Denley. So I Paul don't Sterling think. as well, right, Kunal? Yes, yes, yes. Harry Tector, Paul Sterling, Balburney. Oman is not dependent on one two players. They have five six quality players: Jishan Maksood, Akib Lia, Jatinder Singh, Bilal Khan. I don't see the name of Bilal Khan. I think so. Bilal Khan. Bilal Khan. Yes, Bilal Khan is also there. There's bowling in it. Yeah, Ayan Khan, Bilal Khan, Jatinder Singh, Akib Lias, Jishan Maksud. Yes, five, six players, but let's see because we see today how Sandeep Lamichane smashed 10 overs, 77 runs. So anything can happen. All the team have their quality. If I talk about Sri Lankan team, I think so. Chamira attack from bowling attack from Chamira, Lahiru Kumara. In a spin option, they have Tikshana, Hindu Hasranga. So I don't think that Sri Lanka have anything to choke. If they Yeah. choke, then I think so there will be some question mark for Sri Lanka also. If Sri Lanka will choke by this bowling lineup, Yeah, but this bowling lineup is Shi good. when Sri Lanka will qualify into ODI World Cup, so which group they will go into? I don't think there is any group because I see the fixture that everyone has to play with the both the qualifiers. Every team have to play. So I don't think there is any group system. Oh, so it's not like T20 World Cup, right? Group system. Yeah, yeah. I think there is only 10 teams. Huh? 10. Only two teams going to qualify. 8 teams are already qualified. Yeah. So 10 teams tournament. This is But so. what do you think, I think Konal? Who is favored to win the 2023 World Cup this year? Which are your top four semi-finalists? according to me, Australia, England, Pakistan, India. I think so. These are top four for me. So you're not If I toss, India as well, right? yeah, India, Pakistan, England, and Australia. Yeah, but if you see England doesn't play well in Indian conditions, they struggle in spin, so that's big concern for England. Yeah,
They have good players. Yeah, you can't underestimate this team. But if you Especially see Josh Kiwi, Butler can. but you see New Zealand as well. You can't underestimate them as well. In knockouts, in World Cups, and in knockouts, they perform very well. Yeah, but there is still question mark. There is still question mark about the fitness He is issue. telling England Uh, versus Park finale. He's jinxing. England versus Pakistan. Let's see. I don't think if India come to semi-final, they will try to come in finals. Let's see what will happen. But we know that when World Cup was in India, is gone. When World Cup was in India, there was Sri Lanka who was in the final. So India versus Sri Lanka final. Can this be happen? Let's see, will happen or not. Okay. So I think Krishna, if I talk about this England versus Pakistan final, might be they will be possible if India play bad cricket in semi final. Maybe it depends upon venue also, because there is discussion with venue about venue is also there, that which venue they are playing, whether maybe Ahmedabad or Chennai or which venue. So venue will be also depend for Team India, but I think might be it may be England versus India, maybe might be. Okay. तो गाइस कल के हम थोड़े से बातचीत कर लेते, कल का जो गेम होगा वो किस तरह का गेम हो सकता है। अगर कल की टीम की मैं बात करूँ तो श्रीलंका वर्सेस यूएई। श्रीलंकन टीम की अगर मैं बात करूँ तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी रही थी इनके अगेंस्ट अफगानिस्तान। फर्स्ट मैच में ज़रूर हार का सामना करना पड़ा, बट मुझे लगता है कि ये टीम अच्छी है और स्टिल मुझे लगता है कि ये टीम आगे जा सकती है, टीम अच्छी है ये। और अगर सामने यूएई की टीम की बात करूँ तो उसमें 3 से 4 प्लेयर हैं मुश्किल से जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद वसीम, अ, नृत्य अरविंद, अयान खान, रोहन मुस्तफ़ा, बॉलिंग यूनिट में जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी, रोहन मुस्तफ़ा भी बॉलिंग कर सकते हैं, अयान खान भी, कार्तिक मेयप्पन। तो मुझे लगता है कि मुश्किल है थोड़ा-सा यूएई के लिए, ईज़ी नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो है ये मैच जीत रही है। श्रीलंका की टीम ये इजीली मैच जीत जाएगी। प्रथम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने ओपनर, उसके बाद कुशल मेंडिस, चरित श्रीलंका, सिद्धिरा समरविक्रमा भी हो सकते हैं, धनंजय डिसिल्वा, दर्शन शनाका, वलिंदा हसरंगा, महेश तीक्षणा, उसके बाद के दो फास्टर, दुष्मंता चमीरा, लहिरू कुमारा। तो ये टीम है इनकी। और एज अ थर्ड पेसर जो है मीडियम फास्ट बॉलर जो है वो शनाका ओवर्स डालते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आसान मैच है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आयरलैंड के लिए भी मुझे लगता है कि ओमान की जो टीम है टीम अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी मैं ओपनिंग की बात करूँ तो जतिंदर सिंह होंगे, कश्यप प्रजापति के साथ शोएब खान, जिसान मकसूद, मोहम्मद नदीम, अयान खान, संदीप गौड, नसीम खुशी, कलीमुल्ला, बिलाल खान, अकीब लियास। तो प्लेयर्स अच्छे हैं 5-6, बट स्टिल मुझे लगता है कि आयरलैंड की टीम अच्छी है। पॉल स्टर्लिंग, पीटर मूर जो कि जिम्बाब्वे के लिए पहले खेलते थे, मुझे लगता है पीटर मूर के पास वो एक्सपीरियंस है और उस पिच पे खेलने का तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आयरलैंड को। एज अ विकेट कीपर होंगे वो बेलबर्नी है, हैरी टैक्टर है, कर्टिस कैम्पर, लॉर्क इंटकर, जॉर्ज डॉकरेल है, एंडी मैकब्राइन, मार्क एडर, आपको यंग भी दिख रहे हैं इसमें, कैराग यंग, जॉस लिटिल, ग्रैम ह्यूम। तो बहुत अच्छी टीम दिख रही है आयरलैंड की। मुझे लगता है कि ये जो टीम है जीत जाएगी मैच को ईज़िली। ओमान की टीम 5-6 प्लेयर्स पे टिकी है और बाकी आयरलैंड के जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं वो सेटल नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई
फेरबदल होने के चांसेस हैं। बाकी मुझे मैच अच्छा देखने को मिलेगा, इसकी मेरे को मैं गारंटी अभी से ले सकता हूँ। जिस तरह से आज का मैच हुआ है, मुझे लगता है कि कल भी हमें सेंचुरीज देखने को मिलेगी, अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा अराउंड 290 से 300 तक। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट करिएगा। और किस तरह का मैच हो सकता है, क्या एक स्कोर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये 290 से 300 तक का स्कोर जो है ये बन सकता है। इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, हम लोग आपके वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में रोज़ कवर कर रहा हूँ, आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए, अपने सुझाव ज़रूर देना है। ऐसे ही हम लाते रहेंगे रोज़ वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्पेशल, बातचीत करेंगे कौन सी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, कौन सी टीम आगे जा सकती है। बट मेरे हिसाब से कल के लिए श्रीलंका और आयरलैंड की टीम जीत रही है कल का मैच। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीत रही है, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें KFCS को, और क्रिकेट दुनिया को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं गाइस कल बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गुड बाय।